from Aligarh Muslim University, Aligarh. As I have already told you that he is having more than 4 decades experience in teaching and learning. He has successfully worked as Dean, Faculty of Life Sciences, Aligarh Muslim University, Aligarh. Has also successfully worked as Director, Academic Program Committee, Aligarh Muslim University, Aligarh, one of the important committees of this university, wherein every project, if you are applying for any project, you have to submit your project through Academic Program Committee. He has been given this charge. He was given this charge because of his sheer pure research and pure quality. Sir has also successfully worked as Chairman, Department of Zoology, AMU Aligarh. All his work has been published in high impact journals of the world, including the topmost journal of the world, Nature. Participants, those who are aware from this journal, they know that how important is this journal. What is the name of this journal in the world? Nature is the best journal of the world. Getting a paper published in Nature speaks volume about your value in the field of science or any field. So getting your paper published in the Nature is a big deal, actually. He has published 7 books and edited 4 books. Sir has published around 200 research papers, my friends, participants, around 200 research papers in his career spanning for 40 years. Sir has presented a good number of papers in seminars and conferences and workshops. Sir, as I've explained, Sir has been given many awards. Few awards are Ek Janki Ammal National Award on Animal Taxonomy by the Ministry of Environment and Forest, Government of India in 2009. He was given the award in that year. Vigyan Ratan Award by UP government. So many awards. These 2 awards I am naming. Sir has visited many foreign countries regularly. Some of the names I will give here. They are UK, Germany, Japan, China, Korea, etc. Because of the shortage of time, I'm not including all the names of the countries. Sir has successfully guided many PhD theses and MPhil theses. Around 15 theses Sir has guided successfully, and many more. I think this is old data actually I have. Okay, it is more than enough. No need to discuss. Sir, just few seconds only, sir. Few seconds. Sir has been the active member of EC Executive Council, Court, AMU Court, and Academic Council, Aligarh Muslim University, Aligarh. Last line, although many things are there, but because Sir is instructing me to make it short, so the last line that Sir has been the fellow of National Academy of Sciences India, National Academy of Agricultural Science in India, and Linnean Society of London. So many more things have there to his credit, and Sir will talk today on very important topic which is very close to NEP, that is research and development. I think the most appropriate resource person to talk on this. He's having the first-hand experience of doing research as well as helping others in conducting research. So very good, very pure researcher we have requested, and he has acceded to our request. Sir, we are grateful to you that you have given us time and accepted our request. Sir will talk on research and development participants. Okay, thank you, Shakir. Thank you so much for such a long introduction that was not required. Anyhow, I'm now sharing the screen. All of you, can you see the screen? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so a screen is visible. Yes, sir. Any problem? Okay, so this is we have been for last 4 years we have been talking about new education policy. You have been hearing a lot about new education policy, that it will change the whole education system in India, and new approaches have come up, and of course it is a very an outcome of discussions with very senior persons, or from taking information from different universities throughout the world, and the end result is a new policy which by 2023 itself most of the universities have already accepted, and they have started they have modified their syllabi, and they have started teaching in the new mode.
The main aim behind this new education, of course, there has been since 1947, there has been different education policies, and the last one was in 1986 and then 2006. Several education policies were there, and then more recently, from 2015 itself, we started talking about choice-based credit system, CBCS. Uh, in new education policy, also the basic pattern is CBS. The approach has changed because see, choice-based credit system also, the students were allowed to opt for courses outside their faculty, outside their main core courses. Till recently, our students or we all passed through those period that we were very our study was very compartmentalized. If you are a man of suppose biology group, you will be studying only zoology, botany, or chemistry, or if you are a man of physics, mathematics group, you will be studying only physics, chemistry, and mathematics. Or if you are a man of social sciences, you will be studying only 2 papers from social science and 1 from humanities. This was the situation. But when the choice-based credit system came in, they opened the door for other optioning. You can opt courses from other faculty also. Now, the new education policy, based on that, it has come up with emphasis on basically it will, if it works properly, for that will be seen in next 5-6 years. We will have more employable students, and the emphasis is more on skill development and training, less on book study, more on training, more on skill development, and of course, along with that, the capacity building of teachers has to be there. Because what happens, most of you are from colleges. In the universities, there are lots of departments. You can manage the things. You can have skill courses from different departments, or you can have other courses from other departments. But in colleges, that problem occurs. So for that, the UGC came up with this training program, which you are dealing with nowadays. That is, it came up with a program that all the teachers from the university system, especially the assistant professor and associate professors, should undergo a rigorous training of 1 week on few topics. And you know that there are 8 topics. That is, you must have already gone through the lectures of the faculty members on Indian languages or holistic or multidisciplinary education. The main aim behind the new education policy is basically the multidisciplinary education, then academic leadership and student diversity, inclusion, etc. I basically deal with research and development. Basically, I consider myself as, in addition to being a teacher, I've been teaching for the last 4 decades. I consider myself a researcher, and I've given most of my time on research and development in my own department or in the university or wherever in the world I have worked. I worked in more than 20 countries, most of the European countries, and then in Japan, China, or Korea. So I emphasize more and more on research and development, because one thing, if you are working in any academic institution, you think yourself, you are working in any academic institution, what are the basic stakeholders over there? In academic institutions, you have the students, you have the teachers, and the stake of the institution itself is also there. The students, every year the students get admission, and of course there are policies for admission. You screen the students on the basis of merit or competitive test, and the students comes. And what is the main aim? The main aim of students is to study, perform, and on the basis of their performance, you give them different grades, A, B, C, whatever they get. On the other hand, teachers, a student will have examinations maybe after mid-semester or end semester, or now the annual system is no more there, mid-semester or end semester. That is after 3 months or 4 months or 6 months, students will be examined. Or of course, regular performance examinations are also there in the classrooms. But the teachers are assessed every day. Every day when you are going to the class and 50 students are sitting over, they are basically examining you, how you are teaching. So the examination of the teacher is every day there. So they are really taking up they are identifying your teaching record. The students' feedback becomes nowadays a very important aspect here, because when your promotion comes,
the student feedback is being placed before the selection committee, then feedback from the peers. And you also have to give your self-reflection. After 55 minutes of your class, you yourself think, after 55 minutes of your class, you yourself think that, okay, I was satisfied in the class in today. I have been able to satisfy the students today or not. So that is self-reflection or self-evaluation is also there. How much improvement in teaching you have been able to do. And then these are one aspect of teaching. But when you go for selection committees for promotion from first stage in assistant professor to second stage to third stage, or from assistant professor to associated professor, in addition to your performance, which your chairman or head of department or the cards which have come from the students will be there, you will be basically asked what research you are doing, what academic achievement you have done in the form of research, how many papers you have published, how many books you have written, how many conferences you have attended. So the responsibility of the teachers becomes much wider as compared to the students. They are tested every day, and then they are tested on the day of their selection committee for academic progress. Thirdly, the institution, nowadays every institution is also judged by NIRF or by NAC. And on that basis, the institution is graded A, B, C, or the different grading system is there in different forms, both by national grading systems or international grading systems. And these grading systems are basically responsible for giving the name and fame to the institution. And if the name and fame to the institution is there, good students will be coming over there, good teachers will be appointed, and they will be able to fetch money from the government of India or from foreign institutions, so that their infrastructure of the institution can become better. So all the three stakeholders work together to make institution good, to come up with good products. And what are those good products? Good products are your A-graded or good students who are able to, who are being hired by government or private sector very easily. So you have a very compact system is there. Three things work together, and then you have a successful system which works. Now, for the teacher, here we will be talking about teacher, what we teachers have to do. Now, as I told you, you have to do the teaching as well as you have to do research. But we have to maintain, or a teacher has to maintain, a balance between teaching and research activity. That one has to maintain. But what happens? There are certain teachers. When we were students, also the same kind of same kind of words we used to hear from the teachers, and even today some teachers talk in that way. अरे भाई हमारी ड्यूटी तो पढ़ाने की, हमारे कोई को मतलब नहीं है. It is not like that. The responsibility of teacher is both teaching and research. If you are working in a higher education institution, if you are working in a school, no problem. If you are a school is teaching in a secondary school or in a primary school, there is no problem. But if you are teaching in a higher education institution, your responsibility is both teaching and research, and you have to maintain a balance between teaching and research. Then when it comes to research, what you have to have, or you can do either basic research or applied research, because they are complementary to each other. Basic research basically provides knowledge or generates knowledge, whereas applied research is a kind of research which deals with day-to-day problem. Any problem which comes into the society, any disease which develops, or any problem which comes into day, that is that research is called as applied research. But for that also basic research is must, unless you have already the knowledge is there. So they both the research work hand to hand. Now, for a good situation in the university campus, so that you are able to do research, what should be there? There should be a free interaction between university students, research scholars, and scientists. That will actually be able to provide a conducive environment for research in the university. ऐसा नहीं हो कि टीचर और रिसर्च में हमेशा झगड़ा चलता रहे, या स्टूडेंट्स और कॉलेज में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहे. Unless you have a conducive environment, research will not, you will not be able to do research. And of course,
At the end of it, financial assistance for a variety of problems should be provided by the university, or from where the university will provide, we will be talking about at a later stage. So what happens? Uh, uh, for a conducive environment of research in the university, as I told you earlier, research is one of the primary function of the university. And for the conducive environment, what you need is a viable connection between research scholars and guide. There should be no outside intervention, either political or theological. Let the political or theological interaction go outside the boundaries of the college or the university, and there should be optimal allocation of the resources. So these, unless these three things work together, one will not be able to do good research in a particular higher education system or higher education institution. This research can be either necessity or for thirst of knowledge. When we say thirst of knowledge, this is basically the basic research which provides the knowledge, and the knowledge which is being provided today, it may not be of use today, but it may be of use after 10 years or 15 years. So knowledge generation, nowadays the people talk of only industrial research and other things. Okay, that is there because that is required in uh, this age. But knowledge, until if you don't generate the knowledge, at one time a vacuum will be created. Another one is necessity. That is, all of a sudden some problem occur, and the every aspect of whether you are dealing with physical science or biological science or social science, and we have the best example nowadays. That is when corona came in. When corona came in, that was the necessity at a time, how to manage corona, and every section of the society got involved: the researchers, the doctors, the social scientists, and humanity people. The everyone got involved to manage the corona. So the thirst of knowledge can be in any branch uh, of science or arts or social science, or if some necessity occurs, some disease develops in a particular area, or some any kind of problem occurs, some untoward things happen, all the a person involved in any kind of research, they work together to get that problem solved. Similarly, literature also provides you art and music, which is very necessary for the normal function of the society. Now, what has happened nowadays is there is a change, or there is a change in the trend of research in universities, and I would be saying, okay, uh, this is necessary also because the whole world is gradually changing. The whole world is changing, and the whole world is coming gradually in the hands of corporates. So, if you need job, if you not need development of your country, you will have to move from, of course, necessary research to classified research. Classified research is a specific in a specific area uh, to have an integrated kind of research. As I told you earlier, when the problem came for corona, all the physical scientists or biological scientists or social sciences, they started working together. That is basically called as integrated. So the emphasis nowadays is more and more on multidimensional or multi-faculty or multidisciplinary research. Recently, as your coordinator was talking about a paper in Nature, in that paper we have a collaboration of people representing 20 countries. I was representing India in that paper, but there are people from US, from Germany, from England, from China, from Korea, so many countries people. So that is really called as multidisciplinary research, because several people from several parts of the world, if they work together, they will come up with a result which will be highly beneficial to the society. So nowadays, our government also is emphasizing that, okay, in addition to integrated research, you have to move for technological development. You do a research which is which can be converted into technology. Of course, the research which you are doing into social science, you will be saying a research which is being done in social science cannot be converted into
technology, but it can be directly applied into the society. Any research done in social sciences can be directly applied to solve any social problem. That is also a kind of technology. Or any research which is done in science, okay, you simply publish a paper, okay, that is good. You publish paper, maybe that research can be of some use after 10 years or 15 years. But you need to do some research which can immediately be able to solve some problem, or it can be converted into simple technologies, not complicated technologies. And that is the
Hello. हेलो सर। Yes, sir. हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अरे भाई डिस्कनेक्ट हो तो कुछ बता दो भाई मुझे, कब डिस्कनेक्ट हुआ ये? कितनी देर पहले डिस्कनेक्ट हो गया? हेलो। जी सर। Yes. कितनी देर पहले डिस्कनेक्ट हो गया था भाई, बता दिया करो ना। डिस्कनेक्ट हो जाए तो फोन कर दो मुझे। ओके सर, ओके। कब डिस्कनेक्ट हुआ, मैं उसी से शुरू करूँ ना, फिर बीच में रह जाए गड़बड़ हो जाए। 6 minutes before. 6 minutes बिफोर। Yes, yes. एक मिनट, एक मिनट। So you were discussing changes in uh, trends of research in universities. Okay, changes. This one, this one. Sir, screen is not visible. Screen is not visible. Yes, sir. Oh. Right? Is Yeah, it now visible it's now? visible. Yes, yes, sir. Yes. यस सर, अब आ रही Level है। here, different levels of parameters, or this one, changes in trend in research. Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो जो साहब वहाँ डील कर रहे हैं उनसे बता दीजिए कि भाई बता दिया करें। Okay, the emphasis, I have to repeat everything again. Otherwise, it will be just no use. The emphasis now is more on technology development. Basically, what I wanted to say, that basic research is okay, but the general trend throughout the world or in India is that you go to do a research which should be a multidisciplinary research or interdisciplinary research, so that you integrate many departments and then you come up with some kind of technology which can be marketable. And on the basis of this, what I said is that in colleges now you will have a 4-year BSc, and in the 4th year, that is 7th and 8th semester, you will be guiding students for research. Now in colleges, of course, the facilities are not that much. So what is suggested that the students must choose the problems which are local problems, or they should choose some kind of they can develop some kind of technology which could be with minimum involvement that can be created. So that is the main aim, to what we call it as jugaad technology in Indian language. हमारी जबान में जिसको हम जुगाड़ टेक्नोलॉजी कहते हैं, that type of research the student can come and they can convert it into a small appliances or a small application that can easily be marketable. Our main aim nowadays, of government of India or throughout the world, is we should come up with something which is marketable. कि गवर्नमेंट जो है रिसर्च के लिए पैसा नहीं देने नहीं जा रही है. Now a trend has come that government is saying that 70% of the money for research should come from the private sector. And in Indian situation, the private sector is not going to give money. So the colleges have to, or the university have to generate the money from themselves. So if you are able to, जैसे आजकल आप देख रहे हो कि घरों में जहाँ पे सबमर्सिबल पंप्स लगते हैं, पहले मोटर हम चलाया करते थे और पानी और खेत में जब हम पानी लगाते हैं, सब मोटर रात में जनरेटर चला देते थे और बैठा रहना पड़ता था कि पानी भर जाए तो हमको स्विच ऑफ करना पड़ता है. Now in our engineering college, the students have developed technology by which automatically, when a level of water in the ground will reach a particular level, automatically the generator will stop. Similarly, in the houses also, when the tank is full, the generator will the switch will off. So this type of small technologies, which is marketable 400, 500, 600 rupees, that can be created by the small colleges. So that's what I wanted to say here. Then I wanted to say that what is the role of university in colleges? Because research is one of the central mission of a modern university. Of course, is generator of knowledge, and research is complementary to solving problems. Then I started talking about formulating. This is more important. Formulating research priorities, because if you are in a college in a particular area, in a remote area, suppose you are in Bengal or Assam or Punjab, whatever it is better to and all this, because we are talking for college student teachers, and mainly college or state university teachers, where there is always a scarcity of funds. I have no hesitation in saying that the scarcity is always there in colleges.
So in that case, what happens? The university must choose the local priorities, and on that basis, on the basis of local priorities, the university should develop a strategic research thrust of a particular area, and the faculty members and the students should be doing research on those local problems. But in addition to that, if you have come up from some good university after doing your PhD, you should be allowed to do that research also. ऐसा नहीं कि आप अच्छी जगह से ट्रेनिंग लेके आए हैं, वहां पे आपसे कहा जाए नहीं साहब वो तो जो करके आए उसको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ये करिए, नहीं, वो आप ट्रेनिंग लेके आए अच्छी, वो भी काम कर सकते हैं अगर if you develop, if you are able to get funding from some funding agency, and in addition to that you deal with the local problem also. So we were talking about university research policies. अब आवाज जा रही है ना आप लोगों को? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. So, yes, sir. बीच में जो बोल दिया करो तो अच्छा रहता है. हाँ, बीच sir. में जो बोल दिया करो तो अच्छा रहता है. Okay. So every university, I was talking, every university must have a comprehensive research policy, because there is lots of problem nowadays in both integrity and misconduct is very common. You know it very well. I know it very well. Lots of people are nowadays publishing papers in pediatric journals, or copying research from here or there, or they are plagiarism is there. So that should not be there. For that, a definite research policy should be there in the university. Conflict of interest and conflict of commitment, for that also, health, safety, and environmental concern. You are using some chemicals, etc. The disposal of those chemicals, there should be definite policy in the university. If you are involving research involving human subjects, especially in social sciences, you go to different villages or different cities and take data from them. You sometimes ask some questions. You should be very critical that the question which you are asking may not be objectionable to them. So when you are using, when you are involving human subjects, again you have to be very, very cautious. Similarly, research involving animal subjects, and there should be a definite policy regarding functioning of their sponsored projects and establishment of research centers. There should be definite policy in the university, which generally is not there in most of the universities. The new education policy talks of all the research and development cell, which has been created recently by the directive of the that looks into these things. Then code of ethics in research. So inclusion, in the 7th semester. In the 7th semester, you will be teaching related with research and research methodology. In that research methodology paper, there should be 1 unit or 2 units on research ethics. Every student must be taught research ethics. Then for plagiarism, there is a software, Turnitin, which most of the universities are using it, which basically talks about how much similarity your paper has with other papers if somebody challenges that it has been plagiarized. So they talk about 20% similarity, 30%, 40%. So whenever in our universities, okay, whenever we send a paper, we have to send it to our library where it is checked by Turnitin software that there is no similarity. Only then you are allowed to submit the paper. So that type of research ethics should be there in the college also. So similarly, a research advisory committee and research ethics committee should be there in every college. From 2010 itself, Government of India came up with a policy of establishment of Innovation Council in every higher education institution. Of course, the new education policy came in 2020, but incubation center or in this policy by the Government of India came up in 2010 itself. That government emphasized that the students as well as the faculty, their students as well as the faculty in the college and the university, they should be provided a space where they can, if they come up with some new ideas, they should be provided a space where they can work on that particular idea. And they can collaborate with the faculty over there, or they can collaborate with some industry people over there. So every university should have an incubation center, which should be responsible for providing. It should be basically responsible to inspire, encourage, and foster the culture of innovation and a startup among the students and faculty members of the university. To provide students and faculty members a platform along with other people with bright and original idea to work together and incubate ideas
to execution. What is incubate idea means? You have come up with an idea on paper. Now you convert that into uh, some kind of instrument or some kind of your other things to provide synergy between academia and industry. So incubation center has now come up in most of the universities, and I have seen in private engineering colleges even they have an incubation center. But I don't know whether the degree colleges have the facilities for incubation center or not. But they should. They will have to come up with that. Similarly, recently the University Grant Commission came up, gave an recently means 2022 June. They advised all the universities to establish research and development cell. That every university should have a research and development cell. The university launched an initiative to start research and development cell in higher education institutions with a mandate to promoting quality research that contribute meaningfully towards the goal of self-reliant India, that is Atmanirbhar Bharat. Basically, the aim is that there should be a research and development, or the main aim is there should be an emphasis. In addition to teaching, emphasis should be there on research and development in every university, and for that they proposed a committee. There will be a research advisory council for that. There will be a director, there will be different committees, a committee for research program and policy development. There should be a committee to develop collaboration and with other institutions, and there will be a committee for product development, monitoring, and commercialization. So more emphasis is on commercialization. There should be a committee for IPR and legal ethical matters, and of course a committee for infrastructure that will be provided by finance committee. So that type of proposal has come up from UGC, and most of the universities are establishing research and development cell. So unless there is the main aim behind that, every college, every university should have some central place we should be able to, or some central advisory committee we should be able to implement and see whether the research is being done, because the primary function is, I told you in the beginning, it's not only teaching. You have to both go for teaching as well as research. होता ये था डिग्री कॉलेजेस में, मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में कि कॉलेजेस में लोग आते थे, क्लास लेते थे और चले जाते थे और जाके फिर कोचिंग में पढ़ाते थे या दुकान खोल के बैठते थे. दिस इज बीइंग डन इन, आई हैव सीन इन डिफरेंट कॉलेजेस. पीपल जब गाड़ी टाइम 10 बजे से क्लास है, 9:55 पे पहुंचे, क्लास लिया और 11 बजे स्कूटर उठाया और निकल लिए और फिर जाके कोचिंग में पढ़ाया या दुकान खोल ली. हो सकता है आप लोगों को बुरा लगे ये कहने में, लेकिन दिस वाज रियलिटी इन सेवरल कॉलेजेस इन आवर कंट्री. सो द गवर्नमेंट इज wants to change that practice. Then recent development is Anusandhan National Research Foundation. The government has come up with a central body which will look after the funding of research in funding which is done by different agencies like DST or DBT or ICR, ICMR, and other. They will all be under control of ANRF, whose secretary will be the scientific advisor of the Prime Minister. So that body has come up very recently, and it will look after the funding for colleges and universities. Then, okay, we have talked a lot. What is research? How the university, the colleges should be responsible, and how they should promote research. But when you are doing research, पेपर आप भी छाप रहे हैं, हम भी छाप रहे हैं, सब छाप रहे हैं. हर आदमी किताब छाप रहा है. कोई मेरठ में किताब छाप रहा है, कोई बुलंदशहर में किताब छाप रहा है, कोई ऑक्सफोर्ड में किताब छाप रहा है, और कोई कैलिफोर्निया में किताब छाप रहा है, यहीं से बैठा हुआ. So how can we define excellence research? अब हम किसको कहेंगे रिसर्च एक्सीलेंस है? क्या वो किताब अगर मेरठ या दिल्ली में छप गई है तो वो खराब है, और क्या वो ऑक्सफोर्ड में छप गई तो बहुत अच्छी है? What should be the criteria? Which criteria and process are used to assess excellence in research? Excellence in research हम किस criteria पे नापेंगे? किसको कहेंगे ये अच्छी रिसर्च है, ये खराब रिसर्च है, ये किताब जो लिखी गई ये बहुत अच्छी है, ये किताब जो लिखी गई ये बहुत खराब है? There should be some criteria for that. And what are the drivers of research excellence? कौन इसको देखेगा? And how to maximize research impact? और हम कैसे maximize करेंगे इसका research impact? What role the work environment regarding? What is the role of work environment in regarding in research? ये भी चीजें हमें देखने की है कि हम
वर्क एनवायरमेंट, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि हमें यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ही बैलेंस बिटवीन रिसर्चर एंड गाइड, बहुत बैलेंस एनवायरमेंट होना चाहिए, बहुत खुशनुमा होना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं हो। बहुत सी जगह पे सुना जाता है कि स्टूडेंट से टीचर साहब की बन नहीं रही है, गाइड की रिसर्च स्कॉलर से नहीं बन रही है, और दे शुड नॉट बी एनी इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी नहीं होना चाहिए, और कोई भी तरह किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए रिसर्च करने पर। सो दैट दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट हाउ टू डील विद दीज क्वेश्चंस। Assessing excellence in research, generally how to of course there is no definite criteria, कोई defined rule है नहीं, but there are certain methods which are used. अब रिसर्च में दो तरह की हो सकती है, एक तो डिसिप्लिन सेंट्रिक रिसर्च हो गई है, उसके लिए एक अलग क्राइटेरिया हो गया, और क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिसर्च कंडक्टेड, दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया हो गए। डिसिप्लिन सेंट्रिक होता है बिल्कुल ही स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन की रिसर्च हो, और आजकल तो मल्टी डिसिप्लिन रिसर्च की बात होने लगी है, तो उनके दूसरी तरह क्राइटेरिया होते हैं। क्राइटेरिया विच आर जनरली यूज्ड आर रिसर्च इम्पैक्ट or peer review process or metrics. These are the three criteria which are generally used nowadays. Research impact is can be seen only in some specialized cases. That is, there was some problem in a particular area, some disease developed, and you come up with a research paper, you conducted research, you come up with a research paper that introduces some kind of medicine, others, and that really was able to solve the problem. So that can easily be seen. Research impact you can easily see in a very short duration of time. इनके इन्होंने जो रिसर्च की थी, उन्होंने ये नई दवा इजाद की, इससे ये फायदा हुआ, ये डिजीज कंट्रोल हो गई, और ये फॉर कम्युनिटी ये न्यू आइडिया लेके आए। आजकल बांग्लादेश बहुत गर्म जोरों में है। ए मैन बाय द नेम यूनुस, जिन्होंने क्या किया था, ग्रामीण बैंक कंसेप्ट शुरू किया था, रिजल्ट उसका सामने देखने में लोगों को आया, and that's why he got the Nobel Prize, and still that his idea of Grameen banking is accepted by different countries, lots of many. It is said that about 100 countries have accepted that idea. So ये research impact है, ये research impact सामने नजर आया। Okay, you say okay, बहुत अच्छा किया, इनको अवार्ड दे दो, सबको दे दो। But there are other aspects also, जिसके लिए हम peer reviews करते हैं, यानी experts के पास भेजते हैं, और एक्सपर्ट से उनके उस फील्ड के एक्सपर्ट से राय लेते हैं, या आजकल कुछ फॉर्मूले आ गए हैं, जैसे इम्पैक्ट फैक्टर आ गया, एच इंडेक्स आ गया, उस पे लेते हैं। व्हेन इट कम्स टू पीयर रिव्यू में ओके, इट्स गुड, यू सेंड all the journals, they send papers to different experts, and उनके आइडियाज लेते हैं, their opinion लेते हैं, on that basis papers are published. लेकिन peer review is something which is always सब्जेक्टिव है। आपने कोई रिसर्च की, पेपर भेजा, 4 रेफरीज के पास गया, हो सकता है 2 रेफरीज को वो बिल्कुल एब्सर्ड लगे, 2 को बहुत अच्छा लगे, सो देन इट बिकम्स सब्जेक्टिव। तो फिर वहां क्यों होता है, भाई 2 को और भेज दीजिए, उसमें से 3 में, जैसे होता है ना, 5 जजेस की बेंच है, 3 ने फेवर में फैसला किया, 2 ने उसके फेवर में फैसला नहीं किया, सो इट बिकम्स समथिंग लाइक दैट। सो पीयर रिव्यू होता है, that is a system which is done throughout the world, but that is always with a big objection. आपको हमेशा प्रॉब्लम होगा, 2 लोग अगर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं और 3 फेवर में कर रहे हैं, it is a kind of process which is always subjective. तो उस सब्जेक्टिव को खत्म करने के लिए क्या लेके आए, ये लेके आए, मैट्रिक्स लेके आए। 2 तरह की मैट्रिक्स आजकल कॉमनली चलती हैं, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं। आजकल इम्पैक्ट फैक्टर की बात होती है और एच इंडेक्स की बात होती है। यू नो व्हाट इज इम्पैक्ट फैक्टर एंड यू नो वेरी वेल एच इंडेक्स। क्यों भाई, दोनों जानते हैं इम्पैक्ट फैक्टर और एच इंडेक्स, किसे बताने की जरूरत पड़ेगी? हेलो, फिर खामोश हो गई आवाज। हेलो, Yes, sir. जी सर बोल दो, मैं समझ रहा हूँ कि नेट कट गया। इम्पैक्ट फैक्टर, एच इंडेक्स सबको पता है? Yes, sir. You know, basically impact factor is based on citation, number of citation of your paper, Yes, and sir. H index is also calculated on that basis. अलग अलग जर्नल्स के अलग अलग इम्पैक्ट फैक्टर है, on that basis आप जब आप सिलेक्शन कमेटी में जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपके पेपर किस इम्पैक्ट फैक्टर में छपा। There is lots of negative also, there is lots of positive.
we cannot go into details of that. Impact factor is basically a thing which was created by a librarian, क्योंकि उसने वो चाहा कि हम लाइब्रेरी में हमें जर्नल्स जो खरीदने हम वो जर्नल्स खरीदें जिसका ज्यादा साइट होते हैं. That's why he started purchasing only those journals जिनका citation ज्यादा होता था. That was not the impact factor. Never talks of the standard of the paper. ये बिल्कुल सिंपल बात है, क्योंकि एक जर्नल में अगर 20 पेपर छपे हैं, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है? इम्पैक्ट फैक्टर इज द नंबर ऑफ साइटेशन of the papers published in a particular journal for 2 years divided by number of papers. अब 10 पेपर छपे थे एक इशू में, उसमें से 7 पेपर में तो बहुत ज्यादा साइटेशन हुआ और 3 में बिल्कुल साइटेशन नहीं हुआ. लेकिन इम्पैक्ट फैक्टर टोटल पे कंपैक्ट होगा तो वो 3 जिनका साइटेशन बिल्कुल नहीं है उनको भी उतना ही इम्पैक्ट फैक्टर मिलेगा. उस आगे साहब उस जर्नल में छपा था. So that's why lots of people in recent years have been talking against impact factor, but still that is the most popular method of evaluation of research papers when you go to selection committees and departments. Similarly, H index also depends on the number of citation. आपका पेपर कितने बार cite हुआ है. That will again depend on if you are working in a subject area where there are very few people working. The H index, the citation will be less. The H index will also be less. If you are working in an area where more people, आजकल जैसे बायोलॉजिकल साइंस में 90% लोग कैंसर पे काम करते हैं. So you publish a paper, any journal related with cancer, आपके सैकड़ों citation हो जाएंगे within few months. If you publish a paper in some basic aspects, कई साल में हो जाएंगे, दो citation नहीं हुआ. But it doesn't mean that the paper which was published on basic science has no standard, and the public paper which has been published in cancer research is of very high standard. 80% लोग कैंसर पे काम कर रहे हैं, आज तक कंट्रोल नहीं कर पाए. बेसिक रिसर्च में जो काम होता है आज नहीं काम आएगा, कल काम आते. 200 साल पहले जो डार्विन काम कर गए और लोग काम करेंगे वो आज भी होता. वो बेसिक रिसर्च थी, आज भी वो उसकी जरूरत पड़ती है. So these are the two metrics which are being used, but there has been objections, there are objections to those, but still both in India and but the approach is different. In foreign countries, they talk of it, when they talk of impact factor, they talk of impact factor in the specialized area only. Here in India, when you submit a paper, अब तो बहुत से आपके जो पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ CSIR या DST में पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि 2 इम्पैक्ट फैक्टर से कम के जर्नल को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे. There are lots of journals in basic sciences like physics, in mathematics, in biology, where it is very difficult to get a journal of 2 impact factor. उसी तरह अगर बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में चले जाते हैं वहाँ ज्यादातर जर्नल्स के 10, 12, 15 इम्पैक्ट फैक्टर है. So that creates problem. But still we as a researcher we face those things and we will continue to face those things. ठीक है, ये एक एस्पेक्ट हो गया आपका. रिसर्च क्या होती है, क्या हालात है, किस ट्रेंड पे गवर्नमेंट चाह रही है. दूसरा एस्पेक्ट है कि अब हमें रिसर्च तो करना है, चाहे हम यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में है, तो फ्रॉम वेयर गेट द फंड. क्योंकि रिसर्च के लिए जब तक हमारे पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है, हम रिसर्च नहीं कर पाएंगे. अगर हमें एक हिंदी में भी किताब लिखनी है तो कुछ हमें लिटरेचर कनेक्ट करने के लिए, कुछ के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी. इफ यू हैव टू गो रिसर्च इन साइंस यू नीड लॉट्स ऑफ मनी. So research funding is one of the most important element of higher education and higher impact education research. अगर आप आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी जो होगी जहाँ पे फिजिकल और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा या टैलेंटेड फैकल्टी होंगी, क्वालिटी एडमिशन होता होगा और एडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट उसको मिलता है, तो उसके बेसिस पे तो उस यूनिवर्सिटी की वाह होगी, भाई इट इज वेरी गुड यूनिवर्सिटी है, उसका A++ NAC रैंकिंग भी मिल जाएगी और इम्पैक्ट और NIRF में भी फर्स्ट टू 10 में होंगे. दैट इज वन एस्पेक्ट. बट द जनरल सिचुएशन, व्हाट इज जनरल सिचुएशन? अगर अच्छी यूनिवर्सिटी है, सब कुछ अच्छा है, तो दिस इन टर्न इन्फ्लुएंसेस द फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल एज इंडस्ट्री. इट आल्सो अट्रैक्ट्स फॉरेन कोलैबोरेशन. अगर बहुत अच्छा एक एस्पेक्ट है तो. बट सिचुएशन क्या है? Although the government agency have number of schemes to support research and development, but the fact is that most of these funds go to IITs, national institutes and laboratories, and to some extent to central universities. ये इंडिया की हमारी सच्चाई है. क्यों भाई, ये सच्चाई है कि नहीं है? जी सर. ज्यादातर पैसा हमारा जो जाता है IITs में जाता है या नेशनल इंस्टीट्यूट में जाता है, नेशनल लेबोरेटरीज में जाता है या कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाता है.
What is the situation in state university? A large number of state universities and colleges always suffer financial crunch. A large number of state universities and colleges always suffer from financial crunch. Sometimes the faculty members and the funding opportunities from various funding agencies. Opportunities बहुत कम होती है, तो how to fetch fund? हमें मालूम होना चाहिए funding कहाँ से मिलती है. Research funding in India basically comes from government agencies or to some extent from corporate funding. Or a small amount of scientific research is funded by some charitable foundations, also charitable trust also, but very little amount. Mainly funding comes from the government agencies. Main comes from. Or for research funding, you need lots of money. Funding in most of the developing countries is 1.5 to 3% GDP for research. In Sweden, only the country which exceeds 4% of GDP. China भी उसी टक्कर में हो रहा है. But in India, unfortunately, the funding for research or for research in India at present today, this 24 budget, it is 0.8% only. So the funding is very less in our country for research. It is just 0.8%. It was 0.966% a few years back. Now it has come to just 0.8%. In US, $750 billion are funded for research every year. In China, $450 billion are spent on research every year. In our country, only $2 billion research, $2 billion is spent on research every year. So that problem is there. So you have to, if it is there is a scarcity of money, so you have to fight for that. You have to fight for that. How you will fight? You will fight with your caliber, your good ideas, good research projects, etc. So at the national level, you have funding from UGC, CSIR, DST, DBT, ICR, ICR. Different agencies are there which fund research fundings. Similarly, international levels, you have British Council, EU, DAD, JSPS, TWAS, USEF. They all fund projects. They have sometimes they fund collaborative projects. Sometimes they fund for short visits, etc. Some of the universities also give some funding, especially when you are freshly appointed. Sometimes they give seed money, but that is there in very few universities. UGC has. I will not go into details because you open the website, you will be getting everything. Research fellowships are there, travel grants for teachers are there, postgraduate various scholarships are there, Kothari, Radhakrishnan fellowships, and so many fellowships are there. And the UGC schemes, but unfortunately, none of them are functional at present. I'm very sorry to say that these schemes are in UGC schemes, because the UGC has very little funding nowadays. UGC gives faculty development program. For that they give money for our conferences and workshops, network resource centers in colleges, instrumentation facility in colleges, special assistant programs and colleges. So they have different schemes. You can go through the website of UGC and you will come across those schemes, and day to day, time to time they advertise for the fellowships also. Similarly, DST have different kinds of fundings. Inspire scheme is well-known scheme of DST. Then Inspire Manak is there. Wise Kiran is only for females. Then they have comparatively bigger fundings from FIST, which is basically for improvement of the department, not individual scheme. It gives fund for development of and the DST generally gives good funds. Development of the departments. They have DST first and DST 2. There are two levels. In the first level nowadays they are giving 3 to 4 crores. In the next level they are giving more than 5 crores. Then PERS is a scheme of DST which is a combined funding for the whole. I think they include 10 to 12 departments you can include together and you can apply. In our university, we had PERS twice and 13 departments were included in that. But this gives basically, these are fundings basically for infrastructure development. Both FIST, PERS,
SAF, that is sophisticated analytical. These fundings, all these 4 or 5 fundings, they are basically for development of infrastructure. So DST Inspire scheme is there. Then different fellowships are there. Extramural research, EMR projects are there. What then schemes for funding high risk reward research projects are there. Empowerment of equity opportunity for excellence in science, startup projects, early career awards are there, survey schemes. So many schemes are there. But for a junior, for an assistant professor, if you are freshly appointed assistant professor, you have 2 startup projects. One is given by DST and one is given by UGC, in which they easily give 8 to 10 lakh rupees. That is a startup project. Then DST, DBT, CSIR, they have EMR project, that is extramural research projects. There you have to submit research proposals and you ask for funding. These are for science. For social sciences, you have ICSR, that is Indian Council of Social Science and Research. They have fellowships, national fellowships, senior fellowships, postdoctoral fellowships, doctoral fellowships. And with my experience as Director Academic Program, what I have seen is in recent years, ICSR has been very liberal in giving projects of about 8 to 10 lakh rupees or 15 lakh rupees. So anyone from this political science department or economics department, sociology department, or these other social science departments, they can easily apply to ICSR, and fundings are easily given by ICSR. They have fundings for 2 years. The DST, DBT, etc. They have funding for 3 years. Then there are some new schemes, initiatives have come up from the Government of India. That is a startup ground, as I told you, from DST and UGC for freshly appointed faculty members. TechU projects are there basically for engineering colleges. Gyan and Spark, they are basically 2 programs in which you can involve foreign faculty. Through Gyan program, you can invite people from outside India. Of course, there are some restrictions over there that the person can be from first 500 universities of the world. He can come to your department for 1 week or 2 weeks and can give a series of lectures. Under Spark program, you can have a collaborative project from some foreign faculty. 2 persons will be involved from India, 2 from there, and you can have a collaborative project for 3 years. Both these schemes are governed by. It is from the Ministry of Environment, but their headquarters is in IIT Kharagpur. Then, as I told you, for ITSR, in ICSR, the IMPRESS program is very important. This IMPRESS program give funding for 2 years. Then UGC STRIDE program was initiated, but somehow it is not working nowadays. Then other programs initiated were sophisticated instrument centers. Government wanted to open instrumentation centers in some regions of the country, so that you will have a central place where the people from the university, they can and they will be putting on their website what are the instruments available in them, what is the rate for doing some experiment, some data collection, and you can approach them and do the. So that every university cannot purchase such heavy instruments. So these centers will be for big students of 3 crore, 4 crore, 5 crore instruments. And then there is a very prestigious fellowship, that is Prime Minister Research Fellowship. This is a JRF in which 70,000 rupees is given, but this is a very competitive fellowship. Then you have some international funding where United States Education Foundation in Delhi, it gives short-term visit programs or short-term projects. Then British Council support collaborative research. European Union have different projects like Erasmus Mundus or Marie Curie Fellowship. That German have sandwich programs, as well as they have postdoctoral programs for 1.5 years. They have short visits programs also. Third World Academy of Sciences also have fellowships and short programs for visit to South countries. GSPS Japan support collaborative research projects. Then through our Indian National Science Academy, as well as DSC and DVT, they have collaboration with different countries, and they send assistant professors, young scientists to these countries for 3 months and 6 months, and every year they advertise. And these are very, very
attractive programs. You can always apply through these programs, and there is always chances of getting exchange program. 6 months you can go there, and then 3 months you can have a wider arena to see how the research is being done throughout the world. So this is how what are the different kinds of funds which are available at, of course, all these things you can go through the websites and check it. The third aspect of my talk is always, first aspect is what is research, what the university should do for that. Second, what are the from where you can fetch the fund, and third is how to fetch the fund. इन एजेंसी से आप पैसा कैसे लेंगे? And for that, you all are, most of you are PhDs and others, you know that for that you have to submit research proposals to different agencies for funding. So a research proposal, what is a research proposal? A research proposal is basically your plan. It describes in detail your proposed study, and decisions about your study are based on the quality of the proposal. Basically, you submit the proposal to different agencies. Different agencies time to time advertise. Thrust area, they will advertising sometimes thrust area. Sometimes they will have a very broad thrust area. Sometimes they will have very narrow thrust area. But time to time they advertise, and you have to get there from the website. They have to get the application forms, and you have to submit the application for research for proposal. Now, now I will be talking with my experience. What happens when you, because I've been for last 40 years, I've been associated with research by submitting my research projects also and working in different committees. नहीं हमारे साथ और हमारे साथ नहीं, हम कहते हैं हम हिंदुस्तानियों के साथ प्रॉब्लम ये है कि इफ सपोज वी हैव टू सबमिट अ रिसर्च प्रोजेक्ट, हम करते क्या है कि जब रिसर्च प्रोजेक्ट के प्रपोजल के डेट DST या DBT एजेंसी से आ जाती है, अमूमन वो 1 महीने का वक्त देते हैं सबमिट करने के लिए, देन वी स्टार्ट थिंकिंग अच्छा यार चलो यार बैठते हैं इस प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, कुछ काम करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट करते हैं. वी जनरली डू लाइक दिस. और जल्दी जल्दी लिटरेचर देखते हैं और कुछ इधर से उधर से देख के 2-4-10 पेज लिखते हैं और बहुत क्विक सा एक प्रपोजल बना के वी सबमिट. माय आइडिया इज इफ यू हैव टू सबमिट ए रिसर्च प्रपोजल नेक्स्ट ईयर, यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम दिस ईयर इटसेल्फ. 1 साल से पहले से आप सोचना शुरू कर दें कि हमको अगले साल रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना है. You start thinking the issue, and for that, what issue is there? The issue, what problem does your research address? क्या सोच आप सोचेंगे हम जो है वो क्या प्रॉब्लम लेके चलेंगे. डिपेंड कर किस फील्ड में आप हैं. कोई सोशल प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं या कोई बायोलॉजिकल साइंसेस के हैं, मैथमेटिक्स, कोई भी प्रॉब्लम है. यू थिंक अबाउट दैट प्रॉब्लम and review the literature about that problem for a very long डिटेल्ड स्टडी उस प्रॉब्लम के ऊपर, बुक से, जर्नल से, नेट से डिटेल्ड स्टडी यू डू इट फॉर सेवरल मंथ्स. जब सेवरल मंथ्स आप उसकी स्टडी करेंगे, या अगर कोई सोशल प्रॉब्लम है तो यू गो टू, आप सोशल प्रॉब्लम खाली सिर्फ सुन ली कि हाँ फलाने एरिया में सोशल प्रॉब्लम है, उस पर रिसर्च प्रॉब्लम नहीं. यू गो टू दैट एरिया, विजिट दैट एरिया, देखिए रियली रिसर्च प्रॉब्लम वहाँ पे है कि नहीं है, सोशल प्रॉब्लम कोई है कि नहीं है. सो यू हैव टू थिंक ऑन द प्रॉब्लम फॉर several months based on the literature available, based on the books available, based on the knowledge available in media, on the net available, etc. आपने सोचा, and then you come up with an idea. Okay, जैसे अगर साइंस में हम रिसर्च करते हैं, करते हैं तो हमें होता है कि भाई ये इस एस्पेक्ट पे ये काम हुआ है, ये काम हुआ है, ये गैप एरिया है, ये काम और इसमें होना चाहिए था जो अभी तक नहीं हुआ है. अब जब आपने सोचा ये क्या आइडिया है, ये काम हो रहा है, अब उसको फिर आप ये सोचें कि हम ये काम को करेंगे कैसे. रिसर्च डिजाइन, हाउ विल द रिसर्च अचीव दिस, इस काम को हम कैसे करेंगे, क्या ये पूरे करेंगे, और इस रिसर्च करने से हमको बेनिफिट क्या थे. ये 3 चीजें हमें बेसिकली सोचनी है. हमें क्या प्रॉब्लम है, वी विल हैव टू थिंक अ लॉट ऑन द प्रॉब्लम. उस प्रॉब्लम को हम कैसे डील करेंगे, और उससे हमको अगर वो हो जाती है रिसर्च, हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं तो उससे बेनिफिट क्या है. वो रिसर्च का आउटपुट जो आ रहा है वो कोई बेनिफिट कर रहा है, सोशल बेनिफिट कर रहा है, साइंटिफिक बेनिफिट कर रहा है, कुछ बेनिफिट कर रहा है कि नहीं. यू हैव टू थिंक अबाउट दोस थिंग्स. देन
Then outline steps in your research. Proposed research में अब आउटलाइन करें, क्या करेंगे? प्रोवाइड योर सेल्फ विद इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट, जो आपने सोचा था, इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट जो अभी आपने सोचा था, अब उसमें आप अपना दिमाग लगाएंगे, भाई ये प्रॉब्लम है, अब आप अपना दिमाग जो है, इंटेलिजेंस है जो लगाएंगे कि हम इसको हम कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। उस सॉल्व करने के लिए यू मस्ट बी वेरी क्रिएटिव। ऐसा नहीं कि किसी और ने किया था, हमने नकल कर, जो हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग हम लोग रिसर्च करते हैं, किसी और ने किया था इस पौधे के साथ, हम उसके नाम बदल दें, या इस स्पीशीज के साथ हम उसको वही काम दूसरी स्पीशीज का नाम बदल के कर ले। नहीं, यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव, एंड देन व्हेन यू आर क्रिएटिव यू हैव टू जस्टिफाई योर रिसर्च प्रॉब्लम। यू नीड टू जस्टिफाई दैट हाँ ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। Until unless you justify your research problem, the government is not going to give you money. You have to justify the problem. That is, this is the problem, and it has to be done. And you have कैसे सोचना है? You have to think through experiments. छोटे छोटे कोई एक्सपेरिमेंट करके उसको सोचेंगे कि ये इस तरह कर सकते हैं, या जैसे कि मैंने कहा कि अगर सोशल प्रॉब्लम है तो यू गो टू द फील्ड, लुक एट द प्रॉब्लम एंड देन कम अप विद आइडिया। यानी कि जब आप प्रपोज करने जा रहे हैं तो बेसिक, थोड़ा बहुत बेसिक उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्लैंक आप कोई चीज तैयार कर लें, खासतौर से सोशल एज जो प्रॉब्लम लेके आप चलते हैं। यू मस्ट हैव बेसिक डेटा, this is the basic data, and then I want to go further to get more and more data so that I come up with some reliable result. अब ये सोचने के बाद आपको अभी सोचना है कि हमें पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है उसमें, आइदर साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं या सोशल साइंस की रिसर्च करते हैं। यू हैव टू थिंक कि हमको ये करने में पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है, और टाइम भी आपको सोचना है कि हम कितने दिन में ये कर लेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट जो होते हैं या तो 2 साल के होते हैं या 3 साल के होते हैं। हमें ये सोचना है कि वो हम जो हम सोच रहे हैं प्रॉब्लम, वो हम 2 या 3 साल में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये चीजें आप पहले आपके जहन में आने चाहिए, तब आप प्रपोजल लिखना शुरू करेंगे। Any project research project should have a proper proposal in written form। तो होता है, ब्लूप्रिंट होता है, कोई ऐसी चीज नहीं है। अब इसके लिए कुछ लोग ये कहते हैं, और मेरी भी राय ये है कि इफ यू आर ए न्यू रिसर्चर, it will be better if you choose a mentor, find a mentor, एक सीनियर आदमी who may be your PhD guide, जिसके साथ आपने PhD किया हो, उससे आइडिया ले, और he may be a head of department और a senior faculty or faculty who should be cooperative। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो और डंडी मारने की कोशिश करते हैं, तो it is better, but this is for a very fresher person, जो आदमी जो फ्रेशर है, पहली बार प्रोजेक्ट सबमिट करने जा रहा है। if you choose a mentor, आइदर ये कोई PhD सुपरवाइजर जिसके साथ आप PhD करके आए हैं, या आपके फैकल्टी में कोई सीनियर आदमी है जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट चला चुका है पहले, तो उसको अगर आप मेंटर चूज करेंगे तो ही विल बी कम अप विद गुड आइडियाज। आपको प्रोजेक्ट चूज करने में हेल्प करेगा, रिसर्च प्रॉब्लम से सोचने में भी, और प्रपोजल लिखने में भी he will be very helpful to you। So it is always suggested that you pick up one person। फाइंडिंग ए मेंटर में अब ये भी है कि जब बात करते हैं तो ऐसा आदमी ना चूज कर ले कि आपको जो डंडी मार दे। देन अब आपको प्रोजेक्ट चूज करना है, जैसे आपने बताया कि प्रोजेक्ट आप कैसे चूज करेंगे। यू हैव टू रीड थ्रू दिस, दैट कैन बी बेस्ड ऑन योर PhD वर्क आल्सो, और उसका उस प्रोजेक्ट का कुछ गुड रेशनल होना चाहिए। देन यू हैव टू चूज, वो मैंने पहले बता दिया आपको कि आप पढ़ के काफी स्टडी करके यू चूज करेंगे प्रॉब्लम। उसमें कोई देन व्हेन यू आर दी, अब उसमें आप जो गैप एरियाज आपने चूज किए हैं, उसमें यू हैव टू आस्क आर द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स फिजिबल। जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव आप लेने जा रहे हैं, क्या वो फिजिबल है, किसमें, उस टाइम में, और या आप जो सोशल प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं, सैंपल साइज उसका सही है, या टेक्निकल एक्सपर्टीज आपके पास है जो आप करने जा रहे हैं। आर द क्वेश्चंस नोवेल, इंटरेस्टिंग और यूजफुल। जो क्वेश्चंस आप रेज करने हैं वो नोवेल है, नया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग और यूजफुल है। इज द स्कोप ऑफ स्टडी इज वेल फोकस्ड,
और इज इट क्रिटिकल टू आस्क दिस क्वेश्चन। एक चीज और होती है, जब हम सोशल प्रॉब्लम लेके चलते हैं, या इवन कभी कभी हम जैसे मेडिकल के केसेस में हम बहुत से जाते हैं, ब्लड सैंपल लेने चले जाते हैं, और मोहल्लों में चले जाते हैं ब्लड सैंपल लेने के लिए। सो वी मस्ट थिंक दैट इज इट एथिकल टू आस्क दिस क्वेश्चन। मालूम है हमने गए और कुछ ऐसे किसी लेडी से किसी उससे ऐसे सवाल पूछ लिए कि उसको बुरा लगा और लोगों ने मोहल्ले वालों ने डंडा लेके आपको दौड़ा लिया। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, वी हैव टू बी एथिकल तो होना चाहिए और कॉशियस भी होना चाहिए कि हम सवाल क्वेश्चन पूछते हैं। ये सब जहन में जब आने के बाद अब बैठेंगे हम प्रोजेक्ट लिखने। एक प्रोजेक्ट में क्या होता है बेसिकली, प्रपोजल में आप भी जानते हैं, हम सब भी जानते हैं, हम बेसिकली एक पहले पेज पे आपका नाम लिखा जाएगा, कॉलेज का नाम लिखा जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी, क्वालिफिकेशन लिखी जाएगी। उसके बाद वो मांगते हैं 1-1.5 पेज का तकरीबन अराउंड 200 वर्ड्स का आपको प्रोजेक्ट की समरी मांगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव देना होता है। एम्स ऑब्जेक्टिव बाद देना होता है उसमें आपको हाइपोथेसिस, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं। देन आपको मेथोडोलॉजी देना है, रिव्यू लिटरेचर देना है, बोथ इंडिया के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मेथोडोलॉजी देना है, टाइम फ्रेम एक्सेट्रा देना है। मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, बिकॉज आई बीन सीइंग सॉर्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट, जो आपने जहन बना लिया क्या प्रोजेक्ट आपको लिखना है और क्या करना आपके जहन में आ गया है। ऑब्जेक्टिव्स आप लिखेंगे, अब ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, दैट ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी क्लियर कट। होता ही है कि हम जब फ्रेशर होते हैं तो हम ओवर इंथुसियास्टिक हो जाते हैं। हम प्रोजेक्ट सबमिट करें, हम ये भी काम कर लेंगे, वो भी काम कर लेंगे, हम ऑब्जेक्टिव्स हमारे बहुत से हो जाएंगे। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस इन राइटिंग दोज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव से पहले सपोज चलिए, ऑब्जेक्टिव से पहले पहले तो टाइटल ही आएगा प्रोजेक्ट का। तो टाइटल वेरी क्लियर, बहुत क्लियर टाइटल होना चाहिए। 1-1.5 लाइन से ज्यादा का टाइटल नहीं होना, जो बिल्कुल क्लियर का, जो रेफरी के पास जाए बिल्कुल समझ में आ जाए कि आदमी क्या करना चाह रहा है। ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी क्लियर कट एंड यू शुड हैव जस्ट 2 or 3 ऑब्जेक्टिव, दैट्स ऑल। ये साहब, ये आपको आप प्रोजेक्ट हमको जो देंगे 2 साल या 3 साल का, उसमें ये 2 ऑब्जेक्टिव या ये 3 ऑब्जेक्टिव से ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। एंड दे विल बी वेरी हैप्पी टू हियर इट, the expert will be very happy to it. So objective should be very clear. Then आप 1-1.5 पेज का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उस इंट्रोडक्शन में बेसिकली मेंशन करेंगे वो जिस एरिया पे आप रिसर्च करने हैं वो क्या चीज है, उसमें क्या काम हो चुका है, और क्या गैप एरिया जो आप लेने जा रहे हैं। ये गैप एरिया है जो हम करने जा रहे हैं, तो जहां वहां पे वो मेंशन करना है। Then you will be doing a complete review of literature, both national and international level का रिव्यू लिटरेचर करेंगे, मेथोडोलॉजी करेंगे, टाइम फ्रेमवर्क करेंगे। आगे आप बढ़ते चलते हैं। ये तो टाइटल मैंने आपको बता दिया। अब जब जब ये चीजें हम लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव लिख लिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी लिख लिया, इंट्रोडक्शन लिख लिया, रिव्यू लिटरेचर लिख लिया, बहुत इंटरनेशनल दोनों तरह का रिव्यू लिटरेचर हमने लिख लिया उसमें। उसके बाद हम उसमें मेथोडोलॉजी लिखेंगे, डिटेल मेथोडोलॉजी लिखेंगे, टाइम फ्रेमवर्क देना पड़ता है आपको, फर्स्ट 3 मंथ में क्या करेंगे, 6 मंथ में क्या करेंगे, 8 मंथ, 1 ईयर में क्या करेंगे, 1 ईयर के बाद रिपोर्ट देनी होती है, फिर सेकंड ईयर में क्या करेंगे। ये सब लिखने के बाद एक चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट पेज पे जो आपको समरी लिखनी थी, इन दैट 100 और in that 100 or 200 words you have to give a complete gist of the project। मतलब उसी 100-200 वर्ड में उस रेफरी को अब पता चल जाए कि आप क्या करना चाह रहे हैं और क्या रिजल्ट आना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इज इट पॉसिबल टू डू दैट और नॉट। अगर क्योंकि जब जब आपका जब सबमिट करेंगे प्रोजेक्ट प्रपोजल, इट विल गो टू अबाउट 8 to 10 रेफरीज, ठीक है। एंड द रेफरीज आर वेरी सीनियर पीपल, उनके पास बहुत सी एजेंसी से प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। So what they do is they will be reading the first page itself. In the first page itself, if the summary looks attractive to them, उनको लगा कि हाँ ये लड़का कुछ करना चाह रहा है और कुछ reasonable proposal लेके आया, only then they will be reading the whole project. Otherwise, they will not go through the project. You have to keep this in mind. So your summary should be very clear. It should be able to tell you why you are choosing this proposal, how you will be able to do, and what result you are expected to get. That has to be kept in mind.
एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, उसके बाद ठीक है आप एम्स ऑब्जेक्टिव दे दिया, डिटेल रिसर्च प्रपोजल आपने दे दिया, बैकग्राउंड रिव्यू लिटरेचर आप दे देंगे, उसमें रेशनल एंड हाइपोथेसिस उसके दे देंगे क्या है रेशनल प्रोजेक्ट का, देन यू विल बी गिविंग मेथोडोलॉजी आप देंगे, टाइमलाइन दे देंगे उसमें हाउ हाउ यू हैव टू डू, 3 महीने, हर 3 महीने 6 महीने पर कैसे काम करेंगे और रिजल्ट, then you have to give budget, give एम्स एंड ऑब्जेक्टिव लिख लिया आपने, इंट्रोडक्शन दे दिया, रिव्यू लिटरेचर हो गया, रिव्यू लिटरेचर मैंने बताया यू हैव टू गिव बोथ नेशनल इंटरनेशनल गैप एरियाज की बात कर ली आपने, हाइपोथेसिस दे दी और क्या रिजल्ट यू एक्सपेक्ट, एंड टाइमलाइन आपने बता दिया कि हमने फर्स्ट 3 मंथ में ये करेंगे या फर्स्ट 6 मंथ में ये करेंगे, हम इस महीने में सर्वे करने जाएंगे, इस महीने में उसको कैलकुलेट करेंगे, हम ये स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे, दी थिंग्स यू विल बी गिविंग, और ये डेटा लेंगे और हम इतने लोगों का डेटा लेंगे, देन यू हैव टू गिव बजट। कभी भी कोई भी एजेंसी अगर आप जाएंगे तो कोई भी एजेंसी जब पैसे देने में हाथ रोक के देती है पैसा, आप जस्टिफाई करेंगे, आप बजट जो मांगेंगे आपको बजट से आपसे पूछा जाएगा कि आपको हैंड क्या चाहिए, यानी कि रिसर्च पर्सनल क्या चाहिए और इंस्ट्रूमेंट्स क्या चाहिए, 2 चीजें बेसिक मांगते हैं वो, रिसर्च पर्सनल, इंस्ट्रूमेंट्स, एंड देन मनी फॉर अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। You have to, suppose you are asking for दो research assistant या एक research assistant या एक technical assistant मांग रहे हैं, you have to justify why you need 2 research assistant, why you are not able to do it just 1 research assistant, why you are asking for a technical assistant, ये चीजें you will have to explain here. Then the need for the instruments, what are the instruments which are available in department, what other instrument you need and why you need, you will have to give clear explanation of the instruments. अब इसके बाद ये प्रोजेक्ट आप सबमिट करते हैं, जब प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं तो उसमें लास्ट पेज पे ऑफ कोर्स आपकी उसमें तो एक सीवी भी आपका लगता है, लेकिन सीवी लगने से पहले एक पेज पे वो एजेंसी आपसे रेफरी के नाम मांगती है, 5-6 रेफरीज के नाम मांगती है, तो आप अपनी तरफ से रेफरी के नाम देते हैं, वो उनके एजेंसी के पास अपने भी रेफरी होते हैं लेकिन कुछ आपसे ही मांगते हैं। तो हियर अगेन a tip from me is that रेफरी के नाम जो 2 बहुत ही, अब हर मुल्क में जैसे इंडिया में हर फील्ड में कुछ लोग बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, बहुत बड़े वेल नोन होते हैं अपने फील्ड के, तो जनरली इट इज नॉट एडवाइजेबल टू गिव द नेम्स ऑफ बिग पीपल। बड़े लोग में 2 चीज होंगी कि एक तो उनके पास टाइम नहीं होगा, आपका प्रपोजल जाके उनके टेबल पर पड़ा रहेगा बहुत दिन तक, दूसरी चीज दे विल बी वेरी क्रिटिकल, एक एस्पेक्ट ये हो गया। दूसरा एस्पेक्ट, उनका नाम आप मत दीजिए जिनसे आपको चांसेस है, डर है कि ये आपके एंटी करेंगे, हमारी जबान में जिसको कहते हैं एंटी करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो किसी लेवल पे आपके साथ रहे, हो सकता है आप सीनियर हो गए हो, आपने यार हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, साथ में था, या हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में लैब में था, लेकिन अंदर से आपसे फेवर नहीं करता था। सो बी कॉशियस इन गिविंग दोज नेम्स। वो लोग जो हमारे इंडियन मेंटालिटी है, वो लोग वहां पे आपका निगेटिव करेंगे। So you have to be very careful in giving names of the referee. You have to be very careful. ये 2 चीजें जो बताई है मैंने, ये लिखने की नहीं है, ये हमने अपने एक्सपीरियंस से बताई है, ये लिखने की नहीं है। So you have to be very careful in giving the names of the referee. अब रेफरी का नाम दे दिया आपने, उसके बाद आपको आपके सीवी लगाना है, उसमें आपके एप्लीकेंट का सीवी लगाना। सीवी जो है वो एकेडमिशियन वाला सीवी लगेगा, टीचर वाला लगेगा सीवी। आजकल सीवी जो बनने लगे हैं, लोग नेट पे बैठते हैं और नेट पे जैसा सीवी बना हुआ होता है उससे बना, वो सीवी जो बने हुए हैं बेसिकली वो इंडस्ट्रीज के लिए होते हैं, वो पढ़ने लिखने वाले और पीएचडी और एमएससी और रिसर्चर के सीवी नहीं होते हैं, वो सीवी बेसिकली होते हैं वो इंडस्ट्री वालों के होते हैं। तो आवर सीवी इज इंटायरली डिफरेंट। हमारे सीवी में यू स्टार्ट विथ योर नेम, योर फादर्स नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर एड्रेस एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन, योर एक्सपीरियंस, योर रिसर्च पब्लिकेशन, कितने किताबें छापी है, कितने कॉन्फ्रेंस अटेंड किए, ये सब चीजें होती है। वो जो नेट पे जो सीवी देते हैं उसमें पहले आप लाल करके कह देंगे हम ये एक्सपर्टीज हमारा है, और पीला करके कह देंगे कि हम ये तोप चलाया है, और नाम वगैरह पीछे आता है। ये चीजें नहीं, ये चीजें एकेडमिक सीवी में नहीं होती। एकेडमिक सीवी इज ऑलवेज वेरी सिंपल, राइट योर नेम, योर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कहाँ पे काम कर रहे हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, बीएससी में कितने मार्क्स थे, एमएससी में कितने थे, पीएचडी
यूनिवर्सिटी क्या किया, क्या टॉपिक ऑफ रिसर्च था, और कितने पेपर छापे, क्या किया, ये चीजें बेसिकली एकेडमिक सीवी में होती है. सो योर सीवी शुड बी ऑफ दैट टाइप. अब ये सब करके आपको सबमिट कर दिया आपने रिसर्च प्रपोजल. एजेंसी ने रिसर्च प्रपोजल जो है रेफरीज के पास भेज दिया. वहां से उनके पास रेफरीज का कमेंट आएगा. अगर मेजोरिटी अब सबका तो फेवर में नहीं होगा, मेजोरिटी का जनरली वो कहते हैं कि 10 में से 7 का अगर फेवर में आ गया तो हम आपको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाएंगे. अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं. या तो पहले ही वो रेफरी ने सजेस्ट कर दिया हो कि नहीं नहीं ये करेक्शंस इसमें करके फिर से भेजिए, तो इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि दे विल आस्क फॉर सम करेक्शन, सम मॉडिफिकेशन, ओके यू मॉडिफाई एंड सबमिट इट अगेन, और दे मे डायरेक्टली आस्क यू टू कम फॉर प्रेजेंटेशन. अगर आपका फेवरेबल वहां पे कमेंट होता है तो आप जाएंगे वहां प्रेजेंटेशन के लिए, प्रेजेंटिंग योर प्रपोजल. अब वहां पे प्रेजेंटेशन में आप पावर पॉइंट बना, जैसे आपने प्रोजेक्ट बनाया था उसी का पावर पॉइंट बना के सिस्टमैटिक वे में बना के लेके जाएंगे जैसे आपने बनाया था. क्या एम, क्या प्रॉब्लम थी, यू विल स्टार्ट विथ, वहां पे एम्स और ऑब्जेक्टिव से नहीं स्टार्ट करेंगे आप, वहां पे बैकग्राउंड पहले देंगे, क्या प्रॉब्लम थी, क्यों हमने ये प्रॉब्लम चूज की है, इसके बारे में पहले बताएंगे. ये जो भी एस्पेक्ट है उसके बारे में बताएंगे पहले 1-2 स्लाइड में. फिर बताएंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं, हमारा एम ऑब्जेक्टिव ये है, हम ये करेंगे सिस्टमैटिकली, वेरी स्मूथली, वेरी हम्बली. ट्राई टू प्रेजेंट योर प्रपोजल वेरी हम्बली. कुछ लोगों की अंग्रेजी अच्छी होती है, दे ट्राई टू बिकम वेरी हाई फाई, वेरी स्मार्ट. वो उस तरह के लोग वहां पसंद नहीं किए जाते, बिकॉज द पीपल हु आर सिटिंग ओवर देयर वो बहुत सीनियर लोग होते हैं, बहुत पुराने लोग होते हैं. उनका हर तीसरे महीने की एक मीटिंग में वो इस तरह के 20-25 प्रपोजल फेस करते हैं. So you have to be very humble in presenting your proposal, and you should be very clear in mind that कि हम ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम इस तरह सॉल्व करेंगे. If you are able to justify them, you will be getting, वो stick to your, वही आपने इंट्रोडक्शन किया, ये किया, and if you are able to justify, you will be getting the project. Okay? सब सो गए क्या? Yes, sir. सब सो गए? No, sir. प्रोजेक्ट मिला नहीं मिला अभी? नहीं नहीं सर. अभी नहीं मिला. अच्छा चलिए अब देखिए आगे की बात है ये. अब ठीक है प्रोजेक्ट मिल गया. अब कुछ प्रॉब्लम्स यूनिवर्सिटी में होती है जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ. द प्रपोज्ड रिसर्च प्रोजेक्ट मस्ट क्लियरली इंडिकेट ऑब्जेक्टिव नेशनल फलाना ढिमाका कर देते हैं. प्रपोजल मस्ट फॉल विद इन द एक्सप्लिसिट एरिया, वो तो होगा ही. टेक्निकल फिजिक्स प्रोजेक्ट. अब यूनिवर्सिटीज में होता ही है कि आप जब प्रोजेक्ट लिखते हैं आपके दस्तखत हो गए, उसके बाद हेड साहब के दस्तखत होंगे, उसके बाद डीन साहब के दस्तखत होंगे, उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफिस और फाइनेंस ऑफिस घूमता रहेगा. ये होता है ना. और कभी कभी उसमें टाइम निकल जाता है, प्रोजेक्ट वक्त से सब चला नहीं जा नहीं पाता है. दैट हैपेंस इन मोस्ट ऑफ सेवरल यूनिवर्सिटीज. सो हमारे लोगों ने प्रपोज किया यहाँ पे कि यूनिवर्सिटी शुड हैव ए सिंगल विंडो मैकेनिज्म फॉर सबमिटिंग द रिसर्च प्रपोजल. जब मैं आज से 2016 में जब मैं एकेडमिक प्रोग्राम डायरेक्टर हुआ था 2017 में, तो हम लोगों ने एक कहा कि हमारे यहाँ एक सिंगल विंडो मैकेनिज्म होगी, जो सारे प्रोजेक्ट हमारे यहाँ आएंगे और हमारे यहाँ से डायरेक्ट सबमिट होंगे. उसको 10 जगह घूमने की जरूरत नहीं है. सो दैट कट शॉर्ट्स द टाइम. That mechanism should be there in the university, and the PI should have authority to make administrative decisions regarding day-to-day functioning. ये दो बेसिक चीजें हैं जो प्रॉब्लम हमारे यूनिवर्सिटी में है. हम इतनी मेहनत करके हम प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाता है, प्रोजेक्ट आ जाता है. अब फिर जब हम उसको प्रोजेक्ट चलाने की बात होती है तो वहां पे जो बाबूजी लोग बैठे हुए हैं ऑफिस में, वो हर जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. It will start with appointment of the research personnel. Then it will continue with the purchase of the equipments, etc. और उसे मालूम है कि शुरू के 6 महीने से 8 महीने उसी में निकल गए आपके. So that is the responsibility of the university कि वो देखे कि भाई जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है वो पीआई के हाथ में होना चाहिए. That problem is there. Then however, some difficulties faced by PI is smooth project. Hurdles in the appointment of project staff and purchase of equipment होता है. Release of grant from the funding agency is also erratic, and similarly the UC is delayed. दोनों चीजें होती हैं. एजेंसी पहला फंड आ जाता है, उसके बाद दूसरे साल वाला फंड आने में एजेंसी से अमूमन डिले होता है. कभी कभी हमारी यूनिवर्सिटी से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाने में डिले होता है. कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स आर देयर जो प्रॉब्लम्स आती हैं इन इसको प्रोजेक्ट को हैंडल करने में.
So both the PI as well as the university should be very careful in that. All the government of India provide funding for research and development through several agencies. It is still far behind many developing economies in terms of GDP. This is probably one of the reasons, one of the important reasons for our low ranking with developed countries. Some remedial measures must be taken by the university to encourage high impact research in their institution. There should be very strong research policy and research advisory committee monitor the research program of the university. The faculty members should be encouraged to submit good research proposal. ये भी हम faculty members भी ढीले हो जाते हैं, अरे यार हमने पढ़ा, हमारा काम पढ़ाना है, पढ़ाओ घर जाओ. That should not be there. Although there are startup programs of UGC DST, the university must provide some seed money to fresh appointed teachers to start his or her own research. There should be a strong regulation, ethical policy of the university regarding research publication. They should not be allowed to publish in pediatric journals. The university should encourage their faculty members to develop collaboration with international faculty and industry. Some incentives may be given to PI of the project. Of course, ये होता नहीं इंडिया में, बाहर के मुल्कों में मिलता है, but इंडिया में नहीं होता है. But this is all what I wanted to say. Now the mic is on your side. 3 एस्पेक्ट्स मैंने लिए. रिसर्च क्या होती है, कैसी होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज में, फंडिंग कहाँ से अवेलेबल है, और हमें फंड कैसे लेनी है, और फंड जब लेके आए तो हमको यूनिवर्सिटी में कैसे हैंडल होनी है. ओके, नाउ फ्रॉम योर साइड वी शुड एक्सपेक्ट सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड. क्यों भाई? Thank you, sir. You have given very informative presentation, and we are familiar with how the proposal will be written and what will be the possibilities getting the project from different agencies. Yes. I have one query, sir. Yes. In project, they want that it will be either single university or multi-university. That can also be done, yeah. So both the types of projects are submitted. Both the types of projects are submitted. Which type of project will get more chances to get the funding? No, it's nothing like that. That depends on what is the proposal. Okay. It's not that, of course, what happens if it is a multi-institutional project, it means some work will be done. If you come up with a proposal where it is a kind of work which cannot be done in one university. Yes, sir. They will agree, okay, आप यहाँ पे बैठे हो, कुछ आप ये भी हो सकता है आप कहें कि भाई ये एक्सपर्टीज इस एस्पेक्ट का हमारे पास है, इसके दूसरे वाले एस्पेक्ट का एक्सपर्टीज फलानी यूनिवर्सिटी में जो साहब उनके पास है. ओके, इट विल बी ए कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, नो प्रॉब्लम. यस सर. क्योंकि आप जो प्रपोजल सबमिट करने जा रहे हैं, अगर आपके पास उसका एक्सपर्टीज नहीं है तो फिर तो वो प्रोजेक्ट हो नहीं पाएगा. सो इफ इट इज अ वाइडर प्रोजेक्ट वेयर यू नीड मोर देन वन एक्सपर्टीज, इट कैन ऑलवेज बी ए मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट. ओके सर. ऐसा भी हो सकता है आप ही की यूनिवर्सिटी में 2 डिपार्टमेंट के लोग हों उसमें, आपके डिपार्टमेंट को है, किसी और डिपार्टमेंट, दे कैन ऑलवेज बी इन्वॉल्वड. ओके. इसीलिए जो को-पीआई की बात करते हैं आजकल, हर एजेंसी ये कहती है कि देयर मस्ट बी ए को-पीआई. पहले को-पीआई, अब को-पीआई कंपलसरी हो गया है. ओके, थैंक यू. Any other question? Okay. So if there is no other question, आपके कोऑर्डिनेटर साहब कहाँ गए? अस्सलाम सर. हाँ जी जनाब, जी सर. खत्म किया जाए कोऑर्डिनेटर? जी सर, बेहतर है सर. ओके, थैंक यू.